and the topic is microorganisms, friend and foe. So as you can see, in the last session we have covered few topics, and the few topics that we have covered was about bacteria, fungi, protozoa, and where do microorganisms live, and microorganism and us. So we learned all these so far, and we learned about the harmful microorganism also, and we got to know about some common human disease caused by microorganism. So in today's session we are going to learn about food preservation. So आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है. सो आप लोगों ने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि हाउ डू वी प्रिजर्व आवर फूड, अपने फूड को हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं. सो इन टुडेज़ टॉपिक वी आर going to learn about the same. So let's get started. So let me open the Grammarly for you. So just hang on for a second. Okay, so yes, so आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल के बारे में. तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फूड प्रिजर्वेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So there are some microbes which cause diseases in plants, animals and humans. So they are called pathogens. So कुछ harmful microorganisms होते हैं जो plants और animals में होते हैं, उसे हम pathogens कहते हैं. ये आपने पढ़ा था कल के I think last session में. तो अब हम चलेंगे फूड प्रिजर्वेशन की तरफ. ओके, सो व्हाई इज़ देयर अ नीड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. सो फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों होती है और कब होती है. तो मोस्टली आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी अगर फूड प्रिजर्व करती है तो वो कैसे करती है. यूजुअली दे यूज़ रेफ्रिजरेटर टू कीप ऑल द फूड इनसाइड इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो फूड ना ख़राब ना हो जाए, इसके कारण हम क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, हम नहीं बट मम्मी, आपकी मम्मी क्या करती है, फ्रिज में रखती है खाना को, कोई भी फूड आइटम्स हैं उसे रखती है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें हमारे फूड प्रिजर्व किए जाते हैं. ओके, सो ना थोड़ा सा बारीकी से इस लेसन्स के इस टॉपिक की तरफ चलते हैं. Let's start reading from this NCERT. Okay, so here, so as you know that we have learned about the methods used to preserve and store food grains, and how do we preserve cooked food at home. सो पकाया जो खाना होता है उसे हम कैसे बचाते हैं. मान लीजिए
आपको आपने सुबह खाना बनाया एंड यू वांट दैट फूड टू बी लाइक बी इन अ गुड कंडीशन टिल इवनिंग, तो आप क्या करोगे? यू विल पुट दैट फूड इन योर refrigerator, isn't it? So we use refrigerator here. And how do we, okay, and you know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. तो क्या होता है, अगर आप अपने ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशन में रख देते हैं तो उसकी वजह से आपने एक ग्रीन लेयर देखी होगी, उस ग्रीन लेयर को हम कहते हैं फंगस। तो जब वो ग्रीन लेयर प्रोड्यूस होती है तो दैट मीन्स उसमें जो बैक्टीरिया है आपका वो लग जाता है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अब हम let's use this. This will be more convenient when we open this early. Okay, so I think now it is visible to all of you. So we have learned about the methods used to preserve food and store food grains. How do we preserve cooked food at home? So you know that bread is unused under moist condition is attacked by fungus. So fungus के attack से क्या होता है, that microorganism spoils the food. So spoiled food emits bad smell. So how do we know that a food is spoiled? So हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल है, वो ख़राब हो चुका है? तो we'll get a bad smell out of it. So after getting bad smell out of it, what will you do? You will just throw it away. Yes, and it also has a bad taste. So unknowingly, if you taste anything that is already spoiled, you'll get to know one thing, that the spoiled food has bad taste and the color also changes, the food color also changes. So is spoiling of food a chemical reaction? So spoiling of food is a chemical reaction. Yes, is it?
think about it, and you can just write in the comment section that spoiling food is a chemical reaction or a physical reaction. Now, Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. So now she is confused. So what Paheli is saying that she brought mangoes and she did not eat, so it got spoiled. But when she thinks about pickle, mango pickle that her grandmother makes, it doesn't get spoiled, and now she's confused and she wanted to know कि मतलब पिकल ख़राब नहीं होता एंड हमारा मैंगो कैसे ख़राब हो जाता है 2 से 3 दिन में. ओके, so let us study the common methods of preserving food in our homes, and we have to save it from the attack of microorganisms. So here are some chemical methods हैं जिससे हम preserve कर सकते हैं. So yes, so salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called as preservatives. So basically, salt and oil is called as preservative, and we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. So हम जब pickles बनाते हैं, we use salt and oil, and that too the oil will be not like अच्छी quantity में उसमें oil डाला जाता है pickles में to in order to preserve that, okay, preserve the pickle, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया and microbes attack ना कर सके. Now, and yes, one more point, vinegar is also added to the pickle. So sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. So ये दो आपकी common preservatives होते हैं, and they are also used in jams and squashes to check their spoilage. So they are used in jams and squashes to check whether they are spoiled or not. So यहाँ तक आपने ये समझा कि हम फूड को कैसे 2 इंग्रेडिएंट्स से हम स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. नॉट फूड, पिकल के बारे में हमने जाना कि मैंगो पिकल जब हमारी दादी बनाती है, शी एड्स लॉट अमाउंट ऑफ she adds lots of oil and salt so that it should not get spoiled. Now, so how do we preserve our food by using common salt? So common salt की मदद से हम food को कैसे preserve कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये जानेंगे. So common salt that has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. So tamarind, amla, mangoes and even meat and fishes में भी salt का use होता है in order to check like if they are like spoiled or not, या तो फिर उसमें बैक्टीरियाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कॉमन सॉल्ट डालने के बाद. ना, हाउ कैन वी कंजर्व protect our food from spoiling by using sugar? So we are going to learn about this here. So jams, jellies, squashes are preserved by sugar. So sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of the bacteria which spoil food. So
शुगर का इस्तेमाल होता है आपकी जेलीज़ में, स्क्वैशेस में एंड जैम्स जो कि आप यूज़ करते हैं ब्रेड में। तो वो क्या करता है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना कर सके। सो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। सो आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं और कैसे हम शुगर का यूज़ करते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू the next. Now it is by oil and vinegar. So as I told you, जो जब हम पिकल बनाते हैं तो vinegar and oil का यूज़ करते हैं। so यहाँ पे बताया गया है कि oil and vinegar भी ऐसे ingredients हैं जो आपके food को ख़राब होने से बचाते हैं। okay, so use of oil and vinegar prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. So yes, so by the use of oil and vinegar we can protect our food from getting spoiled. Now next move on to the heat and cold treatment. Okay, so what is heat and what is cold treatment? We will learn over here. So you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. So boiling milk kills many microorganisms. So जो milk होता है आपके घर में अक्सर दूध आता ही होगा, तो what your mother does, she'll pour the milk into a vessel and she will boil it. So similarly we can keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. So उसी तरीके से यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फूड में बैक्टीरिया नहीं होंगे। ओके, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. So जो आपने काफ़ी आप दूध के पैकेट्स लेते हैं तो आपने गौर किया होगा पैकेट्स में pasteurized milk लिखा रहता है, तो that milk you can just consume without even boiling them. And इसका रीज़न क्या है वो अब हम जानेंगे. So yeah, pasteurized milk can be consumed without boiling because the milk is heated to about 70 degree centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. तो पहले उसे गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे और उसको ठंडा किया जाता है and then we store it, and by doing so it prevents the growth of microbes. तो जिस तरीके से हमने ये जाना कि अगर हम बॉईल कर लेंगे दूध को तो हम बचा सकते हैं अपने दूध को बैक्टीरियाज़ के लगने से, उसी तरीके से पैस्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं उसे 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड के लिए उसे बॉईल किया जाता है, देन उसको ठंडा किया जाता है एंड देन पैकेट में इसको पैक किया जाता है एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैस्चराइजेशन. एंड ये पैस्चराइजेशन प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर. So you can just write one name here. Who discovered, if you get a question like who discovered pasteurization, so the process called pasteurization, so you can just remember Louis Pasteur. And now storage and packing. So these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो स्टोरेज एंड पैकिंग के फॉर्म में भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो उसमें आपके बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स लगने के कम चांसेस होते हैं. व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन.
So you have learned about the bacterium, rhizobium in class 6 and 7. So it is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. So recall that rhizobium that lives in the root nodules of the leguminous plant. So rhizobium नाम का एक बैक्टीरिया है जो leguminous plant, that is nothing but pulses में रहता है, and we will just see the picture. So the picture is figure 2.9. So यहाँ पे आप देख सकते हैं. So roots of leguminous plants with root nodules. So here it has a symbolic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant, so you may wonder how. So we are just going to understand this. So now we are going to learn about nitrogen cycle, and yes, nitrogen cycle is really important. ये आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो you have to listen here very carefully. So yeah, let's get started. So our atmosphere has 78% of nitrogen gas. So nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. So we know हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है नाइट्रोजन का. So nitrogen का है 78%, and nitrogen is one of the very important and essential constituents of all living organisms as a part of proteins. Okay, so now the atmospheric nitrogen can not be directly taken by plants and animals. So certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Okay, so once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Okay, and nitrogen is then used for the synthesis of plants protein and other compounds. So animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. Okay, so when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compounds to be used by plants again.
So certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, and which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen remains more or less constant. सो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा. तो जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई, इफ़ दे डाई, तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड to the nitrogen waste into nitrogenous compound to use by the plants again. Okay. And now, so there are some keywords that is really important for us to learn. So let's get started. What is an algae? So algae are too small and are not visible to the unaided eye. So we can use, like we can see this by the use of microscope. You can see the algae. And what are antibiotics? So antibiotics are nothing but they can live in all kinds of environment, ranging from ice, cold, so it can live anywhere. And what is antibodies? So antibodies, they can live in all kinds of environments, same like antibiotics. What is bacteria? So बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज? सो कम्युनिकेबल डिसीज कैसे होता है ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. So let me tell you. So communicable disease, one person to the other person हो सकता है, because the disease causing virus, when a person sneezes, it comes or it gets spreads. Okay, that is it, is it? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने तो टॉपिक ख़त्म कर दिया है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चन फ्रॉम हियर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके. सो माइक्रोस्कोप की मदद से वी कैन see the small microorganisms. Okay. Okay. So what's the second one? So blue-green algae fix directly from air and enhance fertility of soil. So it's अभी just हमने पढ़ा था. It's nitrogen and now alcohol. Let me just write this and then move on. So alcohol is produced with the help of. So alcohol कैसे produce होता है? Now they are asking. So it is produced with the help of yeast. Okay, and we have learned about yeast in the last session. So it's a good bacteria. Now cholera is caused by
bacteria. So yeah, you can even copy down the answers over here. Now let's move to the next question, that is take the correct answer. Okay, so let's get started. Now I'm just going to change the color. Okay, so yes, yeast is used in the production of, so yeast का इस्तेमाल क्या होता है, किसके प्रोडक्शन के लिए होता है? शुगर के लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए होता है, या तो फिर ऑक्सीजन के लिए होता है? तो आवर आंसर, ओके, सो व्हाट वुड बी द आंसर? यू कैन थिंक. Yes, so let me tell you what's the answer. The answer would be alcohol. Just now हमने पढ़ा. Now the following is an antibiotic: sodium bicarbonate, streptomycin, alcohol and yeast. तो हमने एक टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था, that is streptomycin. Okay. Now carrier of malaria causing protozoa is, तो हमने पढ़ा था फीमेल मॉस्किटो के नाम से, तो दैट इज़ द आंसर, फीमेल एनोफिल्स. नाउ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, सो ये भी हमें पता है, इट्स अ हाउस फ्लाई. नाउ द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, क्यों राइज होते हैं वो? बिकॉज ऑफ द यीस्ट सेल. एंड नाउ the process of conversion of sugar into alcohol. So sugar से alcohol में जब convert होता है, उस process को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं fermentation. Now we are moving to the third question, that is match the following. So bacteria क्या है? It's causing, it can cause cholera. And rhizodium क्या है? It fixes the nitrogen. Lactobacillus हमने पढ़ा था, that is used to set the curd. Okay. And now, what is yeast? Yeast के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है. So yeast हम बेक कर सकते हैं ब्रेड बनाने में भी काम आता है. And what is a protozoa? Protozoa, it is causing malaria. Due to protozoa, we get malaria. Okay, and now a virus. Virus क्या होता है? तो it producing antibodies बचा है and causing AIDS बचा है. तो the answer is causing AIDS. So virus से AIDS भी फैलता है. And the remaining question you can do at home. Okay. 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so we are done with the lesson microorganism, friend and foe. So if you liked my session, you can drop a like, and you can even follow our page. You can just click on Justtutors. There you will get all the material, all the study materials you will find. Okay, and it's from grade 1 to 10, so you can explore. You will get free study material, and there are some packages that you can buy and test your knowledge. You can test your knowledge using, just you have to click on this and you'll get all the classes and the subject. Okay, and now, so you can even see our worksheets over here, and we have some courses that is for maths, English and science. So this is all for today. So I hope you like the session.